Hello and welcome to still another class on atomic structure. I think we have finished 7 classes so far, right? Yes, Yes, sir. sir. This is perhaps the 8th class on atomic structure. It's a huge topic, and I think we will need one more class. Today will be a very, you know, not I say hectic, but a fast paced program. Of course, I know when you face difficulty, you know what I speak. We know each other for the last several years, not merely 1 year or 3 months or 2 months. Several years we have been associating ourselves through the uranium activity. Uh, so, to we had completed electronic configuration of all the elements in the entire periodic table, all the 118 elements, and the anomalies of few elements, both in the D block, the transition block, as well as, or the transition series, as well as the F block, the lanthanides and actinides. Now you are in a position, even in class 11, if somebody will ask you the EC means not election commission, electronic configuration of any element, whatever the element may be a D block element, say ruthenium. Yes, ruthenium has an anomalous EC. Yes or no? In the 4D series, the anomaly starts from in the 4D series. Yes, look to your copy, your periodic table, and tell me. Don't waste our time. Let me bring the periodic table again to the top, as long as we are talking about. So, already I have annotated. These are all now has to be. Oh, sorry. Go to where from it is starting? Sir, 4D niboyum molybdenum. Huh? तापरे niboyum molybdenum. कौन निबोमियम मु प्रोनाउंसिएशन केते गीत गाइছে ଆମେ मु प्रोनाउंसिएशन ମୁଁ କହିବି Niobium. Niobium. अच्छा नियोबियम ना नायोबियम देखिबा मु जो गीतरे कोन नियोबियम कहिछि ନାଇଁ ସାର୍ ନାୟୋବିୟମ କହିଥିଲେ। मु सब देखिकरी करछि ना कोन भाउज ନା ନିୟୋବିୟମ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବେଦ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ତମର ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି ନାୟୋବିୟମ ନାୟୋବିୟମ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆଣ୍ଡ ଆମେରିକାନ ତମକୁ ଶୁଭିଲା ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା sir. ହଁ ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କରୁ ଆମେ କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରିବା ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ଯେମିତି ସେ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ସେ ସି ୱାଜ୍ ସକ୍ଡ ସି ନେଭର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ମି ଟୁ ଟେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ଡିଟରମାଇନ୍ ବୋଲେ କେଉଁଠି ବ୍ରିଟିଶ ଇଂଲିଶରେ ନାହିଁ କି ଆମେରିକାନ ଇଂଲିଶରେ ନାହିଁ ସେ ଡିଟରମାଇନ୍ କାହିଁ କହୁଛି ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ ପିପୁଲ୍ ସେ ଡିଟରମାଇନ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଡିନାଏ if you follow the incorrect pronunciation, then তুমি যেତେବେଳେ ଆମେରିକା ଯିବ ଇଂଲିଶ ୟୁକେ ଯିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯିବ these are the native English speaking countries where the national language is English. Of course, in US you get thousands of languages people speaking without any hesitation, just like in India. Bengalis come here, they don't speak in English or Hindi. They don't shy away to speak in Bengali. But we guys, sometimes, Odia guys, they shy away when they go to any other state or Bengal or wherever.
They are in a group, Odia group. They try to speak in Hindi. That's a good thing, but they shy away to speak in Odia. Why? Why? We should be as much proud to the language of this soil as they are, as everybody is. We are here speaking in English because of the globalization, that everybody will benefit from the language English, because maybe nature has made the British people as colonists, made colonies throughout the world. Maybe the inner hidden motive or agenda behind the nature, as we sometimes say God, to globalize, to popularize a simple language, the simplest language. Had it not been the simplest language, then it would not have been popular throughout the world, and everyone throughout the world, they try to learn English and speak in English. Okay, what I was saying is, yes, you are correct. Niobium, molybdenum, one electron shift. Technetium, no. Ruthenium, rhodium, palladium, two electron shift. 5 places, completely vacant. Silver, as usual, one electron shift. Now, Swam, what is the anomaly in the 5D series? That is in the third transition series. Where? Sir, Third transition series or 5D series, Rekoti, where are the anomalies? Starting from, platinum gold. yes, precisely platinum and gold. How about it? One electron shift. Gold can be explained easily, and it sometimes appears in the board examination why gold has 6s1, 4f14 and 5d10. Huh? कौन प्रश्न? What is your question? नहीं Don't सर hesitate किसी to ask your question. Maybe you know Odia. We don't bother. This is a program for Odia medium school. ମୁଁ ଜାଣିକି ଇଂଲିଶରେ କହୁଛି। କଣ ପଚାରୁଥିଲ? नहीं सर ପଚାରୁନଥିଲି ସर ଅଡିଓଟା ଅନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। Oh. Okay, good. Then today, ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ପ୍ଲାଟିନମ୍ 4+ ଏଇଟାର ସ୍ପିନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡାଇପୋଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ କେତେ? You have to write down the configuration of platinum 4+ and then find the number of unpaired electrons. That means I'm also asking you to find these, write the EC of platinum 4+ and find the magnetic dipole moment, spin magnetic dipole moment. This is a vector commodity. I'm not trying to sum up, I mean vector sum, not wanting to take the resultant of any electronic orbital angular momentum and then orbital magnetic dipole moment. Only I'm asking about spin angular dipole moment, magnetic dipole moment. You know, you can find the atomic number of platinum from your table or from here. Kete? अरे केते मो प्लैटिनम एटॉमिक नंबर केते? सर 78. 78 केते आंसर हैला कोन? व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वैल्यू? स्वयं को अतरा काई टिक सर √24 बोर मैग्नेटन। √24 माने 5 5 25, अराउंड 5 नहीं, अराउंड 5, नॉट एक्जेक्टली 5, 4.9 समथिंग हो कि नहीं? आज्ञा आगे सर। सर. डू यू एग्री मिस्टर त्रिपाठी? आगे सर. Kainki, for the benefit of the viewers who will be watching later or now watching, since platinum is 78, we ignore 1:2:2 factor. You start from xenon. Look to the periodic table if you are Sir, forgetting. root, Huh? sir, root 3 about the Huh? root 3.
√3 हम कौच देखिवा आगे देखिवा पानी की पानी दूध की दूध सब पता चल जाएगा अभी। तो 78 से पहले जेनॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है। जेनॉन 6s2, since you are crossing lanthanum to hafnium, 4f14, then count 5 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8, but there is an anomaly here. It will be 6s1. This will be xenon configuration. Platinum 6s1 4f14, and it should have been 5d8 but 5d9, right? Now I am asking about platinum 4 plus. One electron here it will go, and 3 more electrons will go, and it will remain 6 electrons. This is full, so you have to open this D to find the number of unpaired electrons. You have to open the 6 electrons: 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 4 unpaired electrons. So the spin magnetic dipole moment is equal to 4 into 4 plus 2 square root in terms of Bm, Bohr magneton. 24 √, ଯାହା କହିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଠିକ କହିଥିଲେ। ତୁମର କଣ ହେଇଛି, ତମେ ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲ କରି କରିନ, କଣ କି सर ପ୍ରବୃତ୍ତି प्लाटिनम କଣ 1 କଲେ प्लस रो बाहर कर देली ଆଁ 1 प्लस रो बाहर कर देली 4 प्लस 1 प्लस ୱାନ୍ ୱାନ୍ କେମିତି ତମେ ତମେ କଣ ଲୋନ୍ ପେୟାରକୁ ନବ କି? नो, यू हैव टू टेक द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ଏବେ करेक्शन କରିଦିଅ। आगे କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। सर प्लाटिनम 1 प्लस रो बाहर कर देली Oh, platinum 1 plus both not it's almost absent. Platinum ro dita achi 2 plus and 4 plus. 1 plus is almost absent and 3 plus is almost absent. Platinum ro dita oxidation state are found in hundreds of compounds of platinum. Okay, good. Today we will be finishing the other thing, shapes of orbitals and nodes, shapes and signs of lobes, and nodes. And we'll be doing photoelectric effect, and also doing the Moseley atomic number determination discovery by his famous, X-ray diffraction study. That we will be doing. And one more class will be winding up with blackbody radiation. Maybe sometimes you are asked in some level questions like, Sommerfeld model of atom, maybe before the quantum mechanics came into a big force. Sommerfeld was, collaborating with Bohr. He was a little bit more open to the idea of the presence of subcells, which Bohr didn't recognize, subcells and orbitals. He, although could not propound the concept of orbital, 3 dimension and all that, but he could foresee, because of the spectral splitting, because of the Zeeman and Stark effect could not be explained, Bohr was helpless. Sommerfeld wanted to give a model, mathematical model, which could prove, from his equation, the lines, the splitting of lines could be explained, the finer lines could be explained with a new empirical constant fine level, fine line constant. He gave a term like fine constant. So he gave it empirically, mathematically, basing on the experimental observation. He didn't go to any
quantum mechanics. Electron is a wave. He didn't talk about that, but he could give some model to explain the G-man effect and start. So that also will do, although it is an obsolete model, Sommerfeld modification. It's sometimes called Bohr-Sommerfeld model, but I say Sommerfeld modification of Bohr's model. And then black body radiation, the Planck was held supreme for his black body radiation study, which was one of the evidences in favor of its quantum theory. E is equal to h nu, hc by lambda. And then we will so we'll talk something about the discovery of electron, the experiment discovery of proton, neutron, which we have deliberately left, and because of the question posed by Mr. Tripathi, I also talked something about the gold foil experiment by Rutherford to give the first convincing model of atom. Rutherford's model of atom, there he asked about the minimum distance, the that the alpha particle can go near the nucleus. We calculated, we derived the equation how to find that. So let's start. Now, let me use to avoid delay. Now see, except s orbital, তুমি ঘরে লিখিব, which has only one lobe. S orbital is spherically symmetrical. We call it there is only one lobe. The lobes of other orbitals are assigned plus and minus sign. S orbital रे one lobe हमें usually plus दे दूं, किंतु every wave function psi has its opposite wave function. Psi and minus psi is there, but you have to write only one while you represent a particular shape in pen and paper. This plus and minus sign that we are going to give, they are not the electrical charge or anything. It is the symmetry property obtained from the Schrodinger's wave equation solution. If some wave function is having a amplitude which is above the mid position, then we give it plus. And if it is going down, the wave phase, the phase of the wave is going down the mid position, then it is minus. It represents the sign of the wave function, which is represented, as you see, by some trigonometrical function, sine theta, cos phi. These things you will know now today. So that makes the sign of the wave function positive and negative. So we will be assigning the plus minus sign to the lobes. But the s orbital has one lobe is given one sign. Others, they both have plus and minus. If this is plus, the opposite lobe is minus. If that is minus, the opposite is plus. I'll see about that. They are not electrical charges. Each wave function psi has also another acceptable solution minus I. That is why s orbital is given plus sign. Not is a consequence of trigonometry. It's not, I mean, it's not angle dependent. তুমি যেতে angle change করো, ওটা radial distance को fix रखिकरी তুমি angle change करो, you will not find the electron density changing. Therefore, any sin theta cos phi एवं आसीबनी s orbital रो psi रो जो expression हमें देखिबा अब टिके परे आसीबनी. But since every wave function has an acceptable solution psi minus psi, not due to any sin theta cos theta, but due to the fact that every psi has a minus psi, that is psi plus psi pariba, not a minus psi pariba. It can also have a minus psi. I mean, देखिबा chemical bond पढ़िबा सेतल देखिबा plus s sangere minus s सेतल पाखु आसीबा, it will form an anti-bonding molecular orbital. We'll talk about that later. These signs will decide the constructive overlapping. Same sign jodi thibo, then their phases are same. They will add up and make the intensity high, make the bonding. But if
they have opposite sign. गोटे phase रे थिला बेलकु sorry गोटे crest रे थिला बेलकु गोटे trough रे थिबो, they cancel. That is destructive overlapping. They will not form any real bond, but they will form a orbital called molecular orbital of antibonding nature. This is called antibonding MO. That is called the molecular orbital theory, which we will be studying later. एबे मुंडरे किसी भाराक्रांत करनी, but I will be making your mundo bharakranta from time to time by sounding things in advance. Now see, s orbital खाली प्लस देली, p रो जो तीनटा ऑर्बिटल अछि px py pz गोटे जगह रे अछि, किंतु मु सेपरेट कर देछि. गोटे प्लस हेले आरटा माइनस, ऊपरटा जदि प्लस हुए फेज रे अछि, एटा एंटी फेज रे अछि, उल्टा फेज रे अछि. जोटा को जहाँ करि परिबो, यूजुअली हमें ऊपर को कि राइट को करू प्लस, एटा माइनस. सो ड्रॉ दिस s orbital plus. It can also have minus. एटा टिके जगह छाड़ लिखि दबो, एतरो इंपोर्टेंट जिंस लिखि दबो. मु आगुआ को जीबी तुम टिके टिके जगह छाड़, अल्प विशेष सेथिरु जेतिकी जिस्ट बाहरिबो, समरी बाहरिबो, सेतिकी लिखिबो. तबे भाबुछ जदि एडा को बेकार जिंस, एटा एक्सेसिव जिंस लिखिया दरकार नहीं, लिखिबो. तुमको दायित्व दिया हला टू फाइंड द समरी ऑफ दैट पेज एंड राइट डाउन, लीव सम स्पेस, किसी जगह छाड़. किंतु एटा ड्रॉ करो मो सामने रे, लेखो ऑपोजिट लोब्स हैव ऑपोजिट साइन. पी रो दीटा दीटा लोब अछि, गोटे ऊपर लोब, एटा मु एमती देखै दी छी डम्बेल भलिया, किंतु एक्चुअली गोलिया, ये फ्लैट हे जिवो, किंतु ऑलमोस्ट गोलिया. ये गोटे गोल, सी गोटे गोल, दीटा लोब्स. हमें तो कुछ चेप्टा करके देखू छी, ठीक सलानी. So p orbital, each p orbital has two lobes. गोटे प्लस हेले गोटे माइनस. अरे लिखि सारलणी चलছে. ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍. ସାର୍ ଲେଖିଦେଲୁ. Now see, आग शुण. Each d orbital has four lobes, और गोटे केवल तीनटा लोब, कि अन्य चारटा जाकर चारटा लोब. ताको कहते डबल डम्बेल शेप्ड. साधारण पिला माने ताको कहते डबल डम्बेल, किंतु डी जेड स्क्वायर रो डबल डम्बेल शेप नुहे. इट हैज गॉट ए वेरी इंटरेस्टिंग शेप, आई विल टेल यू. सो dxy dyz dzx एमाने गोटे कम्युनिटी. परवर्ती काल रे तुम देखिबो, ए जेतेबेले स्प्लिटिंग हबो, जेतेबेले स्प्लिटिंग हबो गोटे क्रिस्टल फील्ड रे गोटे लिगेंड आसीले, सेतेबेले एमाने गोटे ग्रुपिंग कर देबे, कारण एमानकर लोब्स गुडा कर दे लाई इन बिटवीन द एक्सेस. मोर सुविधा पई मु एक्सिस चेंज करूची बारंबार. एठी एक्स वाई करची, एठी एक्स जेड करची, एठी वाई जेड करची, किंतु से माने गोटिए सेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रे असेंबली हेकि अछंती. But to explain and to represent in a good way in pen and paper, I have changed the axes. But the axes are not changed. Whatever you imagine, whatever you presume, that set will remain fixed, and you try to conceptualize, visualize where the four lobes are lying. They lie in between the axes. Eta tana dxy kain hela? Now the lobes are lying in the xy plane, but in between the x and y axis. Eta na xz বা zx kain hela? They lie in the zx plane. एमती प्रकृति रे एमती यदि एटा x करिवा, एटा z करिवा, तले xz प्लेन एटा. y एक्सिस यदि एमती करिवा, तले yz प्लेन एटा. सेटा मन मन भाबुथा मु एक्सिस चेंज करछि. dyz होची कोन? The four lobes are lying in between the y and z axis, but lying on the yz plane. But एमाने आउ गोटे दଳ, एमानकर लोब्स दे लाई along the axis. गोटे हला dx square minus y square, सेटार जो चारटा लोब दे लाई along x axis dita lobe, y axis dita lobe. But here opposite lobes have same sign. यार जदि प्लस प्लस हला, आरटा माइनस माइनस आसीबो जेमति हेले. केवल एस ऑर्बिटल रे जहाँ लिखिबो गोटिए, यूजुअली हम एस प्लस लिखु, किंतु अनुमानकर माइनस आसीबो प्लस आसीबो. किंतु दीटा जोठी लोब्स थिला प्लस माइनस, किंतु जोठी चारटा लोब अछि ऑपोजिट लोब्स ऑफ इक्वल साइन. एटा जदि प्लस प्लस हेले, एटा माइनस माइनस, एटा प्लस प्लस माइनस माइनस. कागु प्लस प्लस नबो, कागु यू कैन डू इट इन एनी वे, राइट. दिस इज आर्बिट्रेरी. बट डी जेड स्क्वायर गोटे अद्भुत. तार दीटा लोब अच्छी जेड एक्सिस रे, ऊपर गोटे लोब, तले गोटे लोब, एंड आउ जो दीटा लोब से माने मिसिकरी गोटे रिंग बॉल देखिछ, रिंग बॉल खेलिछ.
they form a donut shaped donut जो donut खाइଛ donut shaped ring torus ताको दे torus ring ball मने मने भाबो ring ball जो खेल मझिरे कणा ये सेई भलिया गोटे torus donut shaped ताको duff nut कहते donut the pronunciation is donut so the Europeans the British people the Americans they like their children they love donuts the goal थिबो मिठा मिठा ହେଇଥିବ ଏଇ ସବୁ ପାଉଁରୁଟି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ମ ସେଥିରେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବ so donuts so ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଶନି ଗ୍ରହର ବଳୟ ଭଳିଆ ସେଟା ଆଜିକାଲି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲେନ୍ରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସକୁ ସରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଅଛି ଗୋଟେ ଶନି ବଳୟ ଗୋଟେ ଟୋରସ୍ ଡୋନଟ୍ ସେପ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ସୋ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର ବଳୟଟା ଏଣ୍ଟାୟାର ଟୋରସ୍ଟା ମାଇନସ୍ ସୋ ଦେର୍ ଆର୍ 3 lobes सो तुम ऊपरटा क्विकली कर दियो चित्र एंड अपोजिट लिखा पड़ो अपोजिट कौट लिखा अपोजिट लोब्स हैव इक्वल साइन dz square orbital has 3 lobes one of them is a donut shaped ring एटा करिया दरकार नहीं सेही जिंस ये ऊपर जहाँ तले सेया ताऊ टिके विजुअलाइज करिया को मु आउथरे देखैछि कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम ए नेट सोर्स सबुडा को कॉपी पेस्टेड तो सारदेलणी स्वयं जी सरीगलाणी ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଲେଖିଥିଲି। वेरी गुड ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସଇଲା। आमे गोटे काम करिबा पुरी तो पाख मु जेतेबेले पुरी जीवी मु विस्मय को भेटिबी ता माँ केते थर मते कहलेनी केते थर जे मते डाकिलेनी तार तार इयता नाही मु केवल तुमको भेटियो को जीवी एंड कदलीखिया ठाकुर दर्शन एकाठी हो मो छात्र को भेटिबी प्लस ताको पेरेंट्स मान संगे कथा है आउ विस्मयर फादर तो मोर बहुत क्लोज एंड तुम्हें मझे मझे मत देखा करने को आसो तुम सागर मु गपसप करी 15-20 मिनट 50 अध घंटा एवं जदि पाठर किसी डाउट थी केवल डाउट थी पर्सनाल डाउट थी कहबी जब से भल डाउट थाए ताहले मु शेयर करी ग्रुप रे आई मीन इन दी ये so that should be there doesn't matter where you are studying which school which coaching you are going I don't have any thing about that but as long as you are with me you are studying you are following me I will continue to have a healthy and ideal teacher taught relationship मझे मझे आसो देखा करू मु पुरी को डेफिनेटली वर्ष को 2.5-3 थर मु जाए because Puri was my place of study जदियो मु मैट्रिक टा पास करछि बोर्ड स्कूल रो हमर सेतबेले 11th क्लास थिला कि ता पूर्वरु सब पुरी रे 10th क्लास पर्यंत पुरी रे सो माय फॉर्मेटिव पीरियड इज एट पुरी विश्वम्बर विद्यापीठ बट पळे आसली लास्ट को बापांकर बदली ही गला पळे आसली मोर किछि बाट नथिला because my father got transferred from Puri to Cuttack so I had to come so I enjoyed both the schools equally जदि नुहे सेटा मोर फॉर्मेटिव पीरियड भितरे मोर एडोलेसेंट एंड टीनेज एडवांस स्टेज रे मु पुरी रे थी एटा तो 16 वर्ष रे हमें मैट्रिक पास करू सेतेबेले भी 16 वर्ष रे हमें मैट्रिक पास करथलु 11th क्लास हे करिबी इबे के 10th क्लास 15 वर्ष रे पास करूचंती किंतु मोस्ट ऑफ द इंग्लिश मीडियम गाइस दे आर पासिंग इन 16 years after 16 years okay done वीडियो कौन ये लिखिलेनु विस्मय raised his hand
स्वयं अच्छा करथिला अच्छा शुण ଏଇଟା ହେଲା ଲେଖିଲେ ଲେଖ ନହେଲେ ପରେ ଲେଖିବ dz square dx square minus y square ମାନଙ୍କର ଲୋବ they lie along the axis while ଏମାନଙ୍କର they lie in between the axis ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଲେଖ ନହେଲେ ନାହିଁ ନାଉ ସି ଏଗୁଡାକ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଫ୍ ଅର୍ବିଟାଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ତମ କୋର୍ସରେ ନାହିଁ ପଢୁ ନାହିଁ ବି ବଟ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଫ୍ ଅର୍ବିଟାଲ୍ସ ର କେତେ ଗୁଡାକର 6ଟା ଲୋବ୍ସ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଗୁଡାକର 8ଟା ଲୋବ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଠିକ ପି ଅର୍ବିଟାଲ ଭଳିଆ ଅପୋଜିଟ୍ ଲୋବ୍ସ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉ 8ଟା ଲୋବ ଧର 6ଟା ଲୋବ ଅଛି ଅପୋଜିଟ୍ ତାର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ତଳେ ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ଇ ମାଇନସ୍ ପି ଅର୍ବିଟାଲ ଭଳିଆ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଜଷ୍ଟ ପି ଅର୍ବିଟାଲ ଭଳିଆ ଉଲ୍ଟି ଗଲା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଏଫ୍ ଜେଡ୍ କ୍ୟୁଟା ତଳେ ଆସିବା କଥା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆରି ଭଳିଆ ଡି ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ଭଳିଆ ଏଫ୍ ଜେଡ୍ କ୍ୟୁଟା ବଢିଆ ଦିଟା ଲୋବ ଅଛି ଜେଡ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ BAWL ବଲ୍ ଗୋଟେ ବଲ୍ ମାନେ ଫୁଟବଲ ନୁହେଁ ବଲ୍ ବାଉଲ ବାଉଲ ବଲ୍ ଉପରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସସର ଭଳିଆ ସସର ଗିନା ତଳେ ଗୋଟେ ଗିନା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗିନା ତଳେ ଗୋଟେ ଗିନା ଏମିତି ବଙ୍କି ଯାଇଛି ଏମିତି ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ରକମର ଏହାର 1 2 3 4ଟା ଲୋବ ଏକ୍ସେପସନ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର 6 8 4ଟା ଲୋବ ବି ହେଇପାରିବ କାହାର ଡି ଏଫ୍ ଜେଡ୍ କ୍ୟୁର ଆଉ ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ଏଫ୍ ୱାଇ ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଏ ଗୋଟେ ଦଳ ତାଙ୍କର 6ଟା ଲୋବ ଇଏ ଏମ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 1 ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଗରୁ କହିନଥିଲି ଏଫ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ଯୋଉ 7ଟା କାହା ପାଇଁ କୋଉଟା ହଁ ଲେଖିଥିଲି ୟେସ୍ ଲେଖିଥିଲି ତାର ସେପ୍ଟା ଖାଲି ଦେଖେଇଲି ତୁମେ ଡ୍ର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ नो नो ଖାଲି ଦେଖ ତାର 6ଟା ଲୋବ ଏଇ ଦେଖ ଦିଟା ଲୋବ ଅଛି ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ରେ ଚେପ୍ଟା बीन शेप्ड लोब अच्छी एक्स एक्सिस रे बाकी एक्सजेड प्लेन रे 4टा लोब इन बिटवीन द एक्सेस 4टा लोब एक्सजेड प्लेन रे और एक्स एक्सिस रे बीन शेप्ड लोब दीटा बीन शेप्ड एमती फ्लैट एफ वाई जेड डिफरेंस कौन छ वाई एक्सिस रे बीन शेप्ड अच्छी बीन शेप्ड जो दीटा वाई एक्सिस रे बाकी वाई जेड प्लेन रे आउ 4टा नॉर्मल ये आउ आउ गोटे जाति एफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर आउ गोटे एफ वाई इंटू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भूल था 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एमानकर 6टा लोब ये टाइप अच्छी आउ तुम देख आर सबुड़ाक अच्छी नो गोटे प्लेन रे एटा एक्स वाई प्लेन रे एटा वाई ये सबुड़ाक एक्स वाई प्लेन रे बट डिफरेंस तुम नोट कर विल नॉट go to the details of that is slight difference and ମୁଁ ଲେଖିଛି ବି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 2 ହେଉଛି ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ତାର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏଫ୍ ଜେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ଆର 8ଟା ଲୋବ ପୁରାପୁରି these lobes are pointed towards the corners of a cube so ଟିକେ এইটাକୁ ଟିକେ ଯଦି ରୋଟେଟ୍ କରିବ ଏଇଟା ପାଇବ will not spend more time about this मोर जो मु देवी तुमको मोर टेक्स्ट मु जो लिखी इन टेक्स्ट फॉर्मेट से गुड़ाक तुमको शेयर करी समय नष्ट करवा नाउ विल बी कमिंग बैक टू ए पेजटा किसी लेख नहीं खाली लिखिदे पार जे एफ ऑर्बिटल्स रो 6टा 8टा स्लैश 4टा भी लोब अच्छी एफ जेड क्यू रो 4टा लोब एफ एक्स एमानकर 6टा लोब एतिक लिखिदे पारिबो 6टा एवं एतिक लिखिदे पारिबो काल केतेबेले कि कोठी एडवांस स्टेज रे पचार दबो एंड ऑपोजिट लोब्स ऑफ ऑपोजिट साइंस एटा भी लिखि दबो सब गुडा कर कोठी बिग शेप कोठी कोन से तो दरकार नहीं एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड हे गला कोन पचारिबो विश्व आज्ञा नाଇଁ ସାର୍ ଲେଖା ସବୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆଉ ଚିତ୍ର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସସର ଫସର କରିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବଲ୍ ସେଗୁଡ଼ା କାମ ନୁହଁ এইটা କରିଦେଇ ପାରିବ ଏଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ଲୋବ୍ସ ଏଇଟା ମୁଁ 6ଟା ଲୋବ୍ସ ବାଲା କରିଛି दैट मीन्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 वाला भितर କରିଛି प्लस माइनस 2 8टा लोब जो दीटा 8टा लोब गोटे प्लस 2 हेले गोटे माइनस 2 0 ପାଇଁ 4ଟା लोब এটা କରିଛି କାହିଁକି ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହବ
बुझिबा पई नोड्स टा कोठी जाउची अच्छा देन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ए नोड the point at which the probability of finding electron is zero psi square ମୁଁ psi square ବିଷୟରେ କହିବି psi square ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆସିବ discussion ଆଜି psi square psi ହେଉଛି wave function ତାର କିଛି physical significance କିଛି ନାହିଁ it's an amplitude function variable but psi square ଟା negative ଟା positive ହେଇଯିବ psi can be plus and antiphase ତଳକୁ ଆସିଲେ minus but square ସବୁବେଳେ positive ହେଇଯିବ and that gives the magnitude of electron density at a particular point electron density the probability of finding electron is how much किंतु नोड पॉइंट रे सेटा जीरो सो दीटा जिनस को छाड़िया पड़ो न्यूक्लियस एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस आर नॉट कंसिडर्ड एज नोड्स इनफाइनाइट डिस्टेंस रे इलेक्ट्रॉन रहिले सेटा आयोनाइजेशन होकर पळेले सेटा नोड रे जाउनी आटम रो नोड रे जाउनी किंबा न्यूक्लियस नोड रे जाउनी ता भितरे जदी आमे ग्राफ रे देखिबा साइ स्क्वायर वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ रे जदी देखिबा सेटा एक्स एक्सिस को टच करूची रेडियल डिस्टेंस को टच करूची माने सेटा साइ स्क्वायर टा जीरो होइगला साइ स्क्वायर ग्राफ रे केबे तळकु जीवनी ग्राफ टा सबले ऊपर 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 जीवो काइना सब स्क्वायर टा नेगेटिव रो स्क्वायर टा पॉजिटिव सो जेते थर टच करूची एक्स एक्सिस को सेतेटा नोड एवं जो लास्ट टच करूची से टच करिवे इनफाइनाइट डिस्टेंस रे सेटा नोड नुए स्टार्टिंग जोटा होची जदी न्यूक्लियस रो स्टार्ट होता है ओरिजिन रो स्टार्ट होता है से भी नोड नुए केतोडा ग्राफ ऊपर स्टार्ट होचंती we'll talk about that very soon eta kintu lekho the points make a regular surface sabu node point को जदी join कर दबो at a particular radial distance or at a particular angle with respect to the z axis or any reference axis जदी मिसी दबो it will form a regular surface that surface may be spherical that surface may be planar that surface may be conical so that surface is called node नोड बोइले आमे गोटे सरफेस को बुझेइबा आइदर प्लानर सरफेस और स्फेरिकल सरफेस और कोनिकल सरफेस व्हाटएवर सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड व्हाट आर रेडियल नोड्स व्हिच इज एक्चुअली स्फेरिकल इन शेप with respect to radius bile radial node a good angular node which is actually planar in angle na ta diya ichi because it is angle dependent boli kintu actual shape which planar and exceptional case re conical lekhi delo eta pura lekho सर hmm सर Any दीदी question? गोटे आगे सर कौन पचार सर जदि गोटे पॉइंट रे होची गोटे एटम टा आयोनाइज हेतिबो किंतु आयोनाइज होची गोटे इलेक्ट्रॉन टा गोटे सेल को जाइतिबो सेठी नोड हो ना सुबुनी सर गोटे एटम रो इलेक्ट्रॉन गोटे सेल को जाइतिबो एक्साइटेड स्टेट को सेठी नोड माने एठी इनफाइनाइट डिस्टेंस जदि आयोनाइज होला पर इनफाइनाइट डिस्टेंस को निया हलानी सेठी निया हो ना निया हो the infinite distance को माने सुनो the question is we are now studying hydrogen or hydrogen like species Schrodinger's wave equation is also valid to hydrogen and hydrogen like species multi electron species by Schrodinger भी किसी कर नथली परे परे परवर्ती काल रे आसिले बहुत लोक अन्य लोक आसीगले सेथु स्लेटर is one of the profound members Slater जो 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 who is responsible for multi electron system सो तुम मन मन भाव हाइड्रोजन रो गोटे इलेक्ट्रॉन अछि सी एक्साइटेड स्टेट को जाई परिबो जो एक्साइटेड स्टेट को जाई परिबो ताको एक्साइट कले एनर्जी देले पळेबो पुणी फेरिबो टू प्रोड्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन जोटी थाउ इलेक्ट्रॉन जोटी थाउ किंतु जदि एस ऑर्बिटल रहिला ताहले से कोठी रही परिबो नाही एस ऑर्बिटल भितरे कोठी रही परिबो नाही केतेटा नोड आमे देखिबा यदि 1s एटा हित है तार किछि नोड नाही 1s यदि हित है ता भितरे किछि तार नोड नाही ना एंगल चेंज करले किछि नोड पाइबा बिकॉज रेडियल नोड रो आगुरु कहि दउची जस्ट फॉर फन मु बुझेबी सेटा n minus l minus 1 सेतिकिटा
यार एल टा कोई भी कौन एन होची 1 एल होची 0 -1 सो 1 -1 0 तो रेडियल नोड भी नाही एल रो वैल्यू जेहेतु 0 तार एंगुलर नोड भी नाही किंतु 2s को जदी पळेबो इटी 2 लिखिबो 2 s l इज इक्वल टू 0 सो 2 -1 1 द रेडियल नोड 1 अछि सो s ऑर्बिटल जदी से इलेक्ट्रॉन ता 2s ऑर्बिटल को जाए तो इट विल एनकाउंटर विथ अछि इट विल एनकाउंटर विथ वन नोड रेडियल नोड से जाइए रही पार बिकज तार जो फेज आसटी जीरो हो जाऊँगी माने ऊपर को जाकर तले तलू आला बेलू से पॉइंट रे तार साइ स्क्वायर टा जीरो हो जाऊँगी इज ऑल मैथमेटिकल कि कोड देखुची सो सेठी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी पूरा जीरो हो जाव सो यू विल फाइंड सो से रेडियल डिस्टेंस रे सबुतक पॉइंट को मिसई देले से गोटे स्पेरिकल सरफेस करेंगे ताकू ही कहते रेडियल नोड व्हिच इज एक्चुअली स्पेरिकल इन शेप and also the angular node say 0 किछि नाही angle dependent s orbital मानकर किछि angle dependence किछि नाही सेमली 3s धर मु कहबी 2p 2p एटी 2 पुट करबा p रो 1 सो 2 -2 0 हो गला 2p रो कोनोसी रेडियल नोड नाही कोनोसी से इलेक्ट्रॉन जदी 2p रे थाए सो इट विल बी हैविंग एक्सपीरियंसिंग नो नोड सब जगह रही पारियो बट व्हाट अबाउट एंगुलर नोड angular node L is equal to 1 there is one angular node the plane which is bisecting the two lobes so the px orbital है ताले yz plane so सही plane रे electron density 0 electron सेठी बस परिबनी जुआडे बुला बुली करू वेव फॉर्म रे किंतु सेठी बस परिबनी बुझिलो तो ଆଜ୍ଞା sir any follow up ଆଜ୍ଞା question नहीं no sir now से लेक्चर लेनी ଆଜ୍ଞା sir भीष्म ढोलौच कि ए भीष्म कौच स्वयं ढोलौच ନାଇଁ ସାର୍ ଲେଖି ସାରିଲିଣି ସାର୍ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି शुण स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन जोटा आमे पढ़िथिले एच साइ इज इक्वल टू ई साइ केते कथा करथिले सेटा आउ थरे लिखुची मु एई एनर्जी ए जो पोटेंशियल टोटल एनर्जी एंड एटा हला पोटेंशियल एनर्जी इज ई माइनस v एटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रे ताकू जेतेबेले कन्वर्ट करा गला इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स होची कोन तीनटा पैरामीटर कोन तीनटा वेरिएबल्स जेमति कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रे x y z एठी x y z जगह r theta phi r होची रेडियल डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन and theta is the angle between that vector with respect to z axis theta and phi is the angle if you drop a perpendicular to the xy plane and then join with the origin then the angle from x axis to that projection of that vector onto the xy plane that is phi so r theta phi mention kale gote particular point ro position will be defined just like xyz in Cartesian coordinates r theta phi in the polar coordinates assign kale gote point ro position ame jani pariba so ei solution heichi ei equation ru nuhe taku convert kara jaichi polar is a huge equation a square by 8 pi square m 1 by r square del by del r whole into r square del by del r plus 1 by r square sin theta del by del theta sin theta del by del theta plus এটা সব রয়েছে ব্র্যাকেট রে this is the huge operator which is operated upon psi 1 by r square sin square theta del square by del this is the second differential coefficient del square by del phi square that the whole thing is operated upon psi I would have e square by r operated upon psi that will be equal to a constant e this is eigenvalue into the same eigenfunction psi सो यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट रे होची हमरो इक्वेशन टा एटा तमे जस्ट स्पेस छाड़ी दियो एटा टिके लिखिबा पई जस्ट फॉर फन एटा कि दरकार होबन तमरो जस्ट फॉर फन ए पर्टिकुलर स्लाइड टा लिखिबा पई एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जोटा एक्स वाई जेड रे तुम प्रकाश करथिलो सेटा इन टर्म्स ऑफ r थीटा फाई केमथि होबो x कोऑर्डिनेट यार x कोऑर्डिनेट टा ए पॉइंट रो x कोऑर्डिनेट टा होबो r sin थीटा cos फाई trigonometrically you can prove and tar y coordinate माने एटा एठी ड्रॉप कला परपेंडिकुलर एठी पुनी पैरेलल काटिबो x एक्सिस एटा होची y कोऑर्डिनेट ओ एटा में y करछि सॉरी
এইটা এক্স কোঅর্ডিনেট হচ্ছে এইটা, আমি এক্স অ্যাক্সিস এটাকে ধরছে আর সাইন থিটা ফাই। তেଣୁ ওয়াই কোঅর্ডিনেট ইজ ভেরি সিম্পল, প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস এই যেটা হব সেই পয়েন্টটা হচ্ছে দি ওয়াই কোঅর্ডিনেট হুইচ ইজ আর সাইন থিটা কস ফাই। And finally, the z coordinate is simply r cos theta. The z coordinate to drop karibo perpendicular to z axis. Z is equal to r cos theta. So এই কনভর্সন ফ্যাক্টরটা আমি ইউজ କରିବାକୁ পড়িବ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସକାଶେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପି ଡି ଏଫ୍ ଏଇ ଅର୍ବିଟାଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଲୋବ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ଅଛି which explain the function of the wave function ର ଯେଉଁ ସିମେଟ୍ରି ପ୍ରପର୍ଟି, ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଫେଜ୍ ରହୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଏସ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ଦେଖିବ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आसबनी, एटा कार तो मुझे देखनी खाली देखुची कन्वर्सन टा देखी वर्तमान देख। इंटरेस्टिंगली आमको स्प्लिट करने को पड़ो, यहाँ तुमको लिखा पड़ो कौन साइ, नाउ साइटा को आम देखा पड़ो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड फंक्शन आम ताकू आम सॉल्व करने सॉल्व कर पोलर कोऑर्डिनेट रे। सो साइ नाउ इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। We have to split this main function psi into three part functions, one capital R, one capital P, one capital F। तब कौन थे RR, P theta, F phi। R टा केवल रेडियस डिपेंडेंट, तब कौन थी रेडियल फंक्शन। ये देखो तीनटा पार्ट फंक्शन, रेडियल फंक्शन RR, capital R is the function name and small r is the radial distance। It only takes care of the function psi ର जोटा रेडियस डिपेंडेंट फंक्शन टा ताको सेपरेट कर दिया आर आर, जो थ्रू डिटरमिन करा जाइथिला n। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज डिटरमिन्ड फ्रॉम द आर आर फंक्शन पार्ट फंक्शन रेडियल पार्ट। देन एंगुलर पार्ट दीटा एफ फाई एंड पी थीटा। एफ फाई होची फाई फंक्शन एंगल डिपेंडेंट, जो थ्रू m प्रथम आग m डिस्कवरी होता m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पी थीटा को कहते लेजेंडर फंक्शन लिखिनी यहाँ तार ना गोटे बढ़िया अच्छे लेजेंडर इक्वेशन, तो इक्वेशन टा हूँ लेजेंडर इक्वेशन। पी थीटा फंक्शन टा हूँ कौन से थ्रू एल एजिमुथल क्वांटम नंबर बाहर थिला। ईच पार्ट इज सेपरेटली सॉल्व्ड। The radial wave function r gives the solution of different orbitals only with respect to radial distance r। এটা को लिखो, এটা को लिखो। It's not too much mathematical but informative, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି लिखियो। It is psi is equal to the product of three part function, is the product of three part functions। ओवर अरे हाँ रे मुझे कौन चिंता रही देख मजा जिनस बर्तमान आर आर फंक्शन टा भिन्न भिन्न ऑर्बिटल पे नबा एथरे कौन साइन थीटा कॉस थीटा आसीबनी, कौन साइन थीटा कॉस थीटा आसीबनी। যেতବେଳେ ଆମେ ସାଇ ବାହାର କରିବା ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣିବା ସେଥିରେ ଯାଇକି ବାହାରିବ କୋଉଥିରେ ସାइन थीटा कॉस थीटा दुईटा कॉस फाई साइन थीटा थिबो दुईटा जाक कोटार गोटाए आसीबो, कारण आम रिलेशनशिप आम जानी सारूँ एक्स वाई जेड सांगे थीटा फाई आर कौन रिलेशनशिप। किंतु रेडियल फंक्शन जोटा सेटा रे कौन साइन थीटा कॉस थीटा आसीबो नाही, तीनटा जाक गुणा हो आसीबो। सेटा देखिबा ऑर्बिटल रो जो शेप बाहर
गुणा ହେଇକି ସାଇ ରୁ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ଆର୍ କାହିଁକି ପଢିବା ରେଡିଆଲ ନୋଡ୍ସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରୁ ଆମେ ଯାଉଛେ 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 ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛେ 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 କୋଉଠି ଆମେ ନୋଡ୍ ଭେଟିବା ତେଣୁ ଫଙ୍କସନଟା ଜାଣିଲେ ରେଡିଆଲ ଫଙ୍କସନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କୋଉଠି ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି ଆର୍ଟା ୟୁଜୁଆଲି ବହିମାନଙ୍କରେ ସେଟା ସାଇ ଦେଇଥାଏ because most of the books, I don't say all, they mean psi is equal to r. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ୱେଭ୍ ଫଙ୍କସନ ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ରେଡିଆଲ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସଟା ବାହାରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏ ପାର୍ଟ ଫଙ୍କସନରୁ ବାହାରିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ରେଡିଆଲ ପ୍ୟାଟ୍ ଫଙ୍କସନ ବଟ୍ in your stage psi r ଜାଗାରେ psi ଲେଖିଲେ ଚଳିବ କାରଣ we are not changing angle so that part ଟା theta and phi ଯେଉଁ ଥିବ ଗୁଣିଦେଲେ ସେଇଟା constant ରହିଲେ so that it all become constant excepting this parameter that we are going to learn. So for the r for the ଏଟା ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିନି ଏଟା ଲେଖିଦେଲେ ଭଲ 1s ପାଇଁ लिखिदवा 1s ऑर्बिटल पाई रेडियल फंक्शन होची एटा 2 into z by a नॉट जानछो a नॉट रो वैल्यू जानछो a नॉट रो न्यूमेरिक वैल्यू जानछो 0.529 एंगस्ट्रॉम यू नो दैट इज द कांस्टेंट एंड तारो एक्सप्रेशन टा भी जानिछो पचरने डोंट वरी भूल जेथियो to the power 3 by 2 e to the power minus zr by a naught because we are dealing with hydrogen and hydrogen like species. Helium plus हेले 2 हबो lithium 2 plus हेले 3 हबो that we know. Schrodinger's wave equation is still valid for one electron system. Zr by a naught e to the power zr by a naught कुआड वाला मोर कर्सर yes एटा हेले भलो हबो yes and ए जो कांस्टेंट टा इट इज ए 1s रो कांस्टेंट टा एटा बहुत जिंस अछि एटा को मु एक्सपैंड करी कहबी कोउटा को गुणा फेडा करी करी ए कांस्टेंट बाहर दीज आर ऑल ह्यूज वन ताकू मु शॉर्टकट कर दीची इट इज ए कांस्टेंट ऑफ 1s ऑर्बिटल then what is the variable e to the power minus zr by a naught so r is one variable here and accordingly the part function r will change. Now we have to see a naught value पर 8 देइची in cgs एतिकी si देइनी r for the 2s ये 2s लिखिदेले सुविधा हो is a oh अरे रे देइनी का गेट देइची परा अरे रे 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 एठी पर देइची k1s टा कोन एतक z for a particular species z is constant a naught is constant 2 is constant 3 by 2 and all this is constant k1s देइची न देइची will know I am sorry and 2s orbital पाई a constant एतक then variable रे भितर आसुची k2s 2 minus zr by a naught into e to the power minus zr by 2 a naught देखो एटा केमती ग्राफ रे हमें कन्वर्ट करिवा एटा होची 2p पाई 2b पाई এই টাইপর প্যারামিটার নাই অমুক মাইনস অমুক নাই এই যে মাইনস সাইন আছে না সেইটা হি নোট দেবার সাহায্য করিব আর এটা চেঞ্জ করি গলে এই যে জেডআর বাই এ নট যেটা এইটা আছে এই ভ্যালুটা যেতে 2 সাথে সমান হয়ে যাব 2 minus 2 0 হয়ে যাব এন্টার আর 0 হয়ে গলা মানে দ প্রবাবিলিটি উইল বি 0 অফ কোর্স আর স্কয়ার নবা আর মধ্যে আমি জানি পারিবা আর 0 হলে আর স্কয়ার বি 0 অবশ্য আরটা নেগেটিভ হলে আর স্কয়ারটা পজিটিভ সেটা ঠিক আছে কিন্তু 0 হলে 0 সেমতি 2p র সেমতি ফ্যাক্টর নাই কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি এটি গোটে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টর তুমি দেখুছ যেটা এস রে নাই কৌশি এস রে নাই এই আর গোটে গুণা হয়েছে গোটে আর গুণা হয়েছে তো নিউক্লিয়স পাখু যেটা আরম্ভ করা অবশ্য নিউক্লিয়স পাখু আমি ড্র কলা বেড়ে গ্রাফটা অরিজিন গ্রাফ করা তো নিউক্লিয়স পাখে মিনিমম ডিস্টান্স হচ্ছে 1s जो मोस्ट प्रोबेबल अवश्य आम देखा in wave mechanical concept the electron cloud of 1s orbital is surrounding everywhere up to the nucleus up to the nucleus पर्यंत electron density अच्छी that's the quantum mechanical calculation don't be swayed away अरे मिसी जाऊनी no this is quantum mechanics 2p ଏଠି ଗୋଟେ r जो ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଅଛି
that makes the graph to start from the origin. Kintu s orbital re r nahi, tenu at the nucleus or from the nucleus it will start from the highest value. The electron density will be highest for the any s orbital near the nucleus or at the nucleus ta kohante, at the nucleus. But for all p and d also dekhiba gote r thibo, r ta 0 hela mane entire function ta 0 hoijibo, the electron density is 0. Just remember this. Eita lekhibo na ghare lekhi dabo koth na lekhi sarloni? सर आर टा स्मॉल आर टा काहा रिप्रेजेंट करे? स्मॉल रेडियल डिस्टेंस पर गोटे न्यूक्लियस एटी अच्छी, तुम जीव एमती 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 जाऊच, एंगल को छाड़ गोटे फिक्स्ड एंगल फाइ थीटा रिमेनिंग सेम, गोटे फिक्स्ड डायरेक्शन रे जाऊच, आर टा एटी एटी एतिकी आर, एटी गले एतक आर, रेडियल डिस्टेंस बुझी पारनो? आगे आगे एटपे कंफ्यूजन हुए बोली बही मानकरे साइ लिखा जाए। ए आर टा फंक्शन वेव फंक्शन जो साइ रो गोटे पार्ट, capital R theta. Don't confuse capital R with small r. Small r is radial distance from the nucleus. बुझलो? यस स्वयं बुझलो? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଟା ଲେଖିଲ ନା ଲେଖିବ ଘରେ? ସାର୍ ଲେଖୁଛି। ହଉ ଯେ ଘରେ ଲେଖ। ଏଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଘରେ ଲେଖିବ ହେଲା, ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। Now see, total जो तीनटा जाक गुणी देले, ये जो आर आर पी थीटा एफ फाइव गुणी देले 1s ऑर्बिटल रो एटा से कौन सी साइन कस आसुनी, 2s ऑर्बिटल मध्य साइन कस आसुनी, कारण s ऑर्बिटल रो कौन किछि नाही, किछि एंगल डिपेंडेंस किछि नाही s ऑर्बिटल, किंतु तार कौन सी डिटेल्स तो मु कहूनी, तार p थीटा f फाइव फंक्शन दे आर हैविंग ओनली कांस्टेंट, द p थीटा and f5 function carries only constant, they do not carry any sine cosine function. So ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଆସୁନି, ଖାଲି constant ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। constant ଟା ଦେଖ ଏଠି ଥିଲା 2 into z by a naught 3 by to the power 3 by 2, ଏଠି constant ଟା 1 by root pi z by a naught 3 by जे 1 by z by a naught 3 by 2 ଟା constant ଅଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି 1 by root pi କୁ, because ସେମାନଙ୍କର constant ମିଶି ଯାଇଛି, e to the power zr by a naught ଟା common ଅଛି, सेमती एटा कॉमन अच्छी, एटा खाली साइन एटा नै 2s रो कोनसे sin थीटा नाही, किंतु आर कांस्टेंट ता चेंज है, एटा 1 by 2 root 2, एटी 1 by 4 2 root pi root over 2 pi, आउ सब ठिकाना अछि। एटा दिस इज 2p साइ आसी गला, तेथरे आसी गला cos थीटा, एथरे आसी गला दिस इज 2pz, एटा 2pxy, m is equal to 0 हेले 2pz plus minus 1 is for x, 2px and py तमानकर अलगा, ता संगे साइन थीटा संगे ए कॉस थीटा जगह साइन थीटा आसी, एवं आ गोटे e टू द पावर प्लस माइनस आई फाइ। तुम इमेजिनरी पढ़ी, इमेजिनरी क्वांटिटी पढ़ी, आई पढ़ालानी? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। हाँ आगे सर वाह, एटा 3s सेतरे मध्य sin थीटा cos थीटा नाही, एटा कांस्टेंट टर्म टा चेंज होईची, बाकी मु कहि नथिली सेतरे भी नथिला, एतरे दी ए जो ब्रैकेट रे गोटे प्लस अछि गोटे माइनस अछि, तेणु यार दीटा नोड आसो, गोटे थे 0 हो 27 संगे सामान हेले, आउ गोटे रहिले एटा प्लस माइनस चेंज होकर 0 हो, सो दैट दीटा रेडियल नोड आसो 3s रे, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन गोटे नोड आसो, बिकॉज दीटा टर्म अच्छी माने दीटा नोड आसो, ऑटोमेटिकली आर चेंज कर जीव पकई पकई जीव, गोटे दीटा आर वैल्यू रे 0 आसो, एटा 0 हो गला माने एंटायर थिंग विल बी 0, एटा 3pz, एटा 3pxpy ये सब अच्छी, देख एटा लिखे दरकार नहीं, तुम खातार भी लिखे दरकार नहीं, तो मुझे देवी सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साइ, किंतु मु मीन करछि रेडियल वेव फंक्शन को आर आर, साइ और आर जोड़ा बही मान साइ दे थाए, हमें आर नौचे ताकू हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, साइ रो भी किछ नहीं, आर रो भी किछ नहीं, psi square or r square is called electron probability density or simply electron density, simply electron density. It gives the probability of finding the electron at a point or within a small unit cubic volume, say 1 cubic picometer, गोटे पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस रे पॉइंट रे हो किंबा आउ टिके अधिका को गले
गोटे स्मॉल क्यूबिक वॉल्यूम एलिमेंट लाइक 1 पिकोमीटर भितर केते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन फ्रॉम साई स्क्वायर और correctly r square. It should be correctly r square, but often we write psi square as the angles theta and phi are kept constant. तो तार वैल्यू गुड़ाक अच्छी किंतु सेटा कांस्टेंट संगे गुणा हो, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग थीटा और फाई, जी कांस्टेंट हो गला एंड ओनली रेडियल डिस्टेंस इज चेंज. एटा लेख ହେଲା मिस्टर त्रिपाठी yes sir ହେଲା again देख ग्राफ करवा 1s ऑर्बिटल पे ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू बिकॉज तार स्मॉल आर नाही इक्वेशन रे आसिकरी इनफाइनाइट डिस्टेंस को जाउची मोरे टच कर दी टच एक्चुअली इनफाइनाइट डिस्टेंस रहबो किंतु आफ्टर ए सर्टन फाइनाइट डिस्टेंस 1s ऑर्बिटल रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाउची ऑलमोस्ट जीरो हो जाउची किंतु थियोरेटिकली इट विल गो टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस बट डजंट मैटर. सो एटा नोड नुहे कि एटा नोड नुहे इन बिटवीन जदि टच करिवो ताहले नोड. So 1s orbital has no node but its electron density साइज हाँ साइज स्क्वायर से खाली बड़ हो ग्राफटा बड़ हो मैग्नीट्यूडटा स्क्वायर हो सो इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस ना आट माने मु मीन करूनी एकदम न्यूक्लियस भितर एट माने नियर द न्यूक्लियस ए 1s orbital रो वेरी इंटरेस्टिंग होची कोन तार फिजिकल सिग्निफिकेंस मध्ये मु बतई केमिति तुम विजुअलाइज करिवो जे एस ऑर्बिटल मानकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस पाखापाखि इज मैक्सिमम एंड एटा दूरक दूरक गले कमी जाउछि किंतु 2s ऑर्बिटल रो जेतु ई फैक्टरटा अछि ई जो फैक्टर 2 माइनस जेड आर बाय नॉट अछि सीटा गोटे समय रे जीरो हो जाउछि एवं तापरे उल्टी जो माइनस फैक्टरटा बढ़ी जाउछि मैग्नीट्यूडटा तो तळको आसुछि तापरे पुणी गोटे मिनिमम पॉइंट को जाउछि पुणी आर चेंज कले इनफाइनाइट डिस्टेंस रे जीरो हो जाउछि आमे ताकू गोटे फाइनाइट डिस्टेंस रे टच करि दैछि सो गोटे नोड आसुछि 2s रो 2p रो दिस आर ऑल रेडियल नोड्स आई मीन ग्राफ मु ऑलरेडी नोड विषय कहि सारलेनी r वर्सेस r ग्राफ फॉर द 2p ऑर्बिटल रे कौन टच करूनी ओरिजिन रु कहीं बाहरुची ना रे से फंक्शन रे गोटे स्मॉल आर अच्छी सो ओरिजिन रु पा न्यूक्लियस रु ता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो बड़ी बड़ी मैक्सिमम को गला देन कमिला सो द मैक्सिमम पॉइंट देखिलो एठी 3s रो एटे 2s पर 3s रो जो अच्छी देखिलो एठी 3s रो तीनटा टर्म अच्छी से तार दीटा जगार रेडियल डिस्टेंस रे जीरो आसो साई और आर कि साई सो जीरो एठी गोटे नोड तलू जाऊँगी पुणी ऊपर को जाऊँगी पुणी क्रॉस कला पुणी जीरो आसूँ पुणी मैक्सिमम जाऊँगी पुणी इनफाइनाइट डिस्टेंस रे जीरो हो जाऊँगी एटा नोड नुहे कि एटा नोड नुहे ये दीटा नोड 3p रे गोटे नोड आसूँ 3p रे देख 3p रे गोटे 3p को देख ये गोटे 6 माइनस जेड ये जो टर्मटा आसूँ दैट मेक्स इट जीरो मझे गोटे जीरो आसूँ 3p रे पुणी तलू जाऊँगी पुणी जाऊँगी 3d रे मो नो नोड 3d दिया ही नहीं सेमती अच्छी ये देनी मु
you will get तार मध्य कौन सी फैक्टर रही अमुक माइनस अमुक फैक्टर रही सो यू नॉट गेट एनी नोड फॉर द 3D ऑर्बिटल सो आम जानिले जे जो ऑर्बिटलटा जो सेल रु स्टार्टिंग होची खाता खोलुची से नोड रेडियल नोड किसी ना 1 रु एस खोलुची 1s रो किसी रेडियल नोड ना 2 रु पी खोलुची 2p रो किसी रेडियल नोड ना डी टा 3D रो खोलुची तार किसी रेडियल नोड ना एफ टा 4f रु खोलुची तार किसी रेडियल नोड ना आस्ते आस्ते गोटे 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 रेडियल नोड बढ़ुची एज वी गो टू हायर एंड हायर सेल 2s रो गोटे नोड 3s रो दीटा नोड 4s रो तीनटा नोड 5s रो चारटा नोड एंड सो ऑन सेति पे फार्मूला करा जी n - l - 1 तो एटा ड्रॉ करो ड्रॉ इट बहुत भाई मानकर साई वर्सेस आर ग्राफ देछि कारण कंफ्यूजन हम दीटा आर कैपिटल आर से कौन लोक कहबे कैपिटल आर कौन पिला कहबे बजे पिला so r capital R is something different it is a part of this eye small r is radial distance with respect to nucleus so radial distance change kole psi change hoba capital R change hoba and that graph we are drawing এটা মিশিয়ে বটে ହେଲା अच्छा now see तार r square ग्राफ करिवा because r has no psi has no physical significance the square कर देले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिनेशन लिख सेले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिनेशन कौन ना इधर पर्टिकुलर पॉइंट रे इलेक्ट्रॉन पाइबार प्रोबेबिलिटी एंड ट्रूली ए स्मॉल क्यूबिक वॉल्यूम एलिमेंट रे इलेक्ट्रॉन मिलिबार प्रोबेबिलिटीटा होची आर स्क्वायर और साई स्क्वायर तार ग्राफ आर ग्राफ समान केवल नेगेटिव पोर्सन जोड़ाक अच्छी से पॉजिटिव हो जाए आउ टे मैग्निट्यूड बढ़ी जाइए दूर आसुचे मु बड़ करनी से ऊपर आसुचे किंतु जार नोड ना से आहरी बढ़ी जाइए जार नोड अच्छी से नेगेटिव गुड़ाक पॉजिटिव हो जाइए 3p रो गोटे नोड थिला तळकु जाइनी किंतु एटा एटा ऊपर को जाइए किंतु कुनी हो जाइए कुनी हो जाइए 3D रो तो नाही खाली बड़ हो ड्रॉ करो क्विकली देन आई विल एक्सप्लेन ए जिंस एटा जिंस ड्रॉ करो नहीं एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई एस ऑर्बिटल रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस और एट द न्यूक्लियस एज वी से सब नोड का सर ये सब नोड का रेडियल नोड्स एंगुलर आज ये 4 ना 5 6 तमर तो 6 रे नहीं 5 रे नहीं तो नहीं 7 रे से बड़ पिलांकर माड़ खाई जो कालिका क्लासटा तेणु भाବୁଛି କାଲି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଜି ନେଇଯାଏ ହଁ କଣ କହୁଥିଲ ବିସ୍ମୟ सर जो ग्राफ है उसके ऊपर रेडियल नोड्स दोचे एंगुलर नोड्स ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେଡିଆଲ ନୋଟ୍ସ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ରେଡିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ଆଙ୍ଗେଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ଆସିବ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଥର ଜେଡ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଠୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯାଉଛି କୋଉଠି ନୋଡ୍ ଆମେ ପାଇବା
कि एक्स एक्सिस रु जाउचे एपड़कू सेपट तळकू कोठी आमे नोड पाइबा देयर इज एंगुलर नोड से कथा आमे डिस्कस करूने सेटा आमे परे आसीबा एबे केवल कैपिटल आर रो वेव फंक्शन को नहीं करी मु देखै देली थीटा फाई मिसे करी साई लिखै देली गुणी करी देखै देली केमती प्लस माइनस साइन काहे कि आसुची लोब्स मानकर ता रीजन होची ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एस ऑर्बिटल से कौन से साइन न थाए एक्चुअली प्लस साइन थाए किंतु एवरी साइ हैज ए नेगेटिव फंक्शन से माइनस भी लिखिपर ना एक्सप्लेन करें केमती एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सृष्टि हम प्लस सांगे माइनस जदि आसीजिवो दे विल नॉट हैव ए कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप दे विल बी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हेले बॉन्डिंग हबनी एंटी बॉन्डिंग हबो सो विल टॉक अबाउट दैट लेटर विश्व बुझिल ड्रॉ कर सारे हाथ कहीं टेकिछ ड्रॉ कर सारे अच्छा देख कहीं एस ऑर्बिटल रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस पाखरे अधिका देख कहीं अधिका आमर साई रो वैल्यू आर रो वैल्यू जो 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 डॉटिंग करवा डॉट 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 करवा मैक्सिमम आसीजो कोठी ना 80 आर जिते दूरक जीवा सेते कमी जीवो सेथिपाई एस ऑर्बिटल रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होची एट द न्यूक्लियस ये लिखी भी तार एक्सप्लेनेशन देइछि एठी probability of finding electron for a s orbital is maximum at the nucleus at really it is near the nucleus and decreases with increase in radial distance 1s has no radial node while 2s has 1 3s has 2 and so on probability of finding electron for other orbitals p d f is 0 at the nucleus and increases to a maximum and then decreases 2p has no node while 3p has one node 4p has two एटा तो ऑलरेडी जानी चाहिए 3D रो खाता खोलला नो नोड 4D गोटे 5D दीटा 4F रो खाता खोलला नो नोड एटा लिखे दरकार नहीं नाउ D कथा आसला द मोस्ट इंपोर्टेंट द रियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कैपिटल D not even r square electron density that is in a small volume element गोटे रेडियल डिस्टेंस गोटे पॉइंट रे कि स्मॉल वॉल्यूम क्यूबिक वॉल्यूम एलिमेंट किंतु द नेट प्रोबेबिलिटी ताको तो एंटायर वॉल्यूम को नबाको पड़ियो तो दैट इज कॉल्ड द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गोटे डी आसी गला सेटा होची कोन आर स्क्वायर तो थिला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ता संगे गुणा हबो 4 पाई आर स्क्वायर गोटे वॉल्यूम फैक्टर गुणा ही गले सो डी रो डेफिनेशन हैला radial probability distribution or definition है radial represents the probability of finding electron in the spherical layer उटे spherical layer करो having a volume element dv which extends from radii r to radius r to radius r plus dr got a small increment in the radial distance ता भीतर entire जो layer टा आसिला spherical layer ता भितर सबुतक मिसेबक पड़िबो the net probability of finding electron in all the small cubic elements जोटा भितर रहिबो पॉइंट रहिबो सेमन को ऐड करले सेटा कोन सेटा होची एक्चुअल प्रोबेबिलिटी से ग्राफटा होची रियल ग्राफ to find to say to visualize to understand the probability of finding electron कोठी मैक्सिमम होची कोठी कम होची सेटा केमिति बाहर करिबा सेंति वॉल्यूम टा जेतु 4/3 पाई आर क्यू हमें स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट नहीं चे डीवी को आकु जदि हमें एटा डीवी बाय डीआर करिबा डिफरेंशिएशन डीवी बाय डीआर सेटा हे जिवो 4 पाई आर स्क्वायर एटी 3 टा 3 पळे आसीबो 3 कटि जिवो सो 4 पाई आर स्क्वायर डीआर रहि जिवो डीआर टा सेपट को नहीं जिवा तो देन आमे आमे कोन करिबा आर स्क्वायर संगे डीवी जदि गुणी देबा तो आर स्क्वायर संगे कोन गुणिबा त माने 4 पाई आर स्क्वायर डीआर सो यही गोटाक टर्मटा डीआर को छाड़देले यही गोटाक टर्मटा हला कैपिटल डी सो कैपिटल डी रो डेफिनेशन होची 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर यूजुअली बहुत बही साई स्क्वायर लिखि साई स्क्वायर से मीन करूची किंतु एक्चुअली आर स्क्वायर से प्रकृत रे सो दैट डेफिनेशन होची कोन द टोटल वॉल्यूम एलिमेंट
dv, which extends from the radial distance r to r plus dr. ସେତିକି ଭିତରେ total probability କହନ୍ତି radial probability distribution d. This is actual probability. ଲେଖିଦିଅ, ଏଟା ଲେଖିଦିଅ. I don't think we'll be able to, these are so very conceptual, and I wanted to go deep into the discussion, and therefore we can't go to photoelectric effect today. Photoelectric effect and blackbody radiation will be covered in the coming class. We shall, after atomic structure, we shall continue periodic classification, which we know many things during our program, periodic classification, song program, and other things. But we will be formally doing. And then might be we will take a break to come back to stoichiometry, more concepts, stoichiometry, oxidation reduction, which we had done, but we'll be doing formally with all home task and other things. Otherwise, you guys still you are not self-help fellows. You need some kind of pressure. So some kind of pressure, little pressure is required. Otherwise, the rest part you take. Large pressure you take, but little pressure should come from the teacher side, parent side. So, Sarela, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, Chitra bhi. ଆଜ୍ଞା ସାର୍. How? Mr. Tripathi. ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ତ ଦେଖୁନ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆଚ୍ଛା ହଁ ଡି ଡି କିନ୍ତୁ r ସ୍କୋୟାର ଟର୍ମଟା ଅଛି ଯଦିଓ ସାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଡେନ୍ସିଟି ୱାଜ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମନେ ରଖିଥା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ electron density or electron probability density was maximum for any s orbital at the nucleus, but when it comes to real probability, that is distribution function, radial probability distribution function, no, real probability d is 0 कारण r square term टा makes r square highest हो माने highest point ରୁ आरंभ हो ये r square term टा जो अच्छी से 0 कर दबो. So all orbitals including s starts from 0, I mean origin. D describes the manner in which the total electronic charge is distributed in space. D describes the manner in which the total electronic charge is distributed in space. This is a practical probability of finding electron in space. Although electron density जोड़ा psi square by r square for s orbital was maximum at the nucleus, but radial probability distribution is maximum at certain optimum radial distance known from the d versus r graph, which you will know that is a naught for 1s, not at the nucleus. The radial distance at which the graph touches the x-axis is a radial node. Nucleus and infinite distance, they are excluded from nodes. Write down this. देखो कौन point d टा 0 आसीगला at the nucleus. देखो साई स्क्वायर टा मैक्सिमम थिला बिकॉज आर टा जते कम हबो सेते साई स्क्वायर टा अधिक हबो e टू दी पावर अच्छी माइनस अच्छी देखो फंक्शन टा e टू दी पावर माइनस अच्छी तेणु डेफिनेटली मैक्सिमम हबो सेटा इज नॉट अ बिग थिंग किंतु d टा केमती कैपिटल d टा केमती 0 होई गला से जिनसटा फिजिकल एक्सप्लेनेशन एठी दउतली सेटा मु भूल रे सेठी टेक अप करूतली. Now I remember that how to explain that capital D again becomes 0, not again, ironically becomes 0 near the nucleus at the for the, all the s orbital because ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକା ଅଛି ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା ଅଛି
किंतु प्रकृति जदि लेयर टाको नब से लेयर रे बहुत कम आसीबो न्यूक्लियस जत्ते पाखक पळेबो आउरी कम आसीबो डॉट गुडा एट द न्यूक्लियस जीरो आसीबो किंतु एट सर्टेन ऑप्टिमम रेडियल डिस्टेंस जोडी मैक्सिमम पॉइंट देखुछ सेटा ए नॉट हे पारे 2 ए नॉट हे पारे सब गुडा को एक्सप्रेस करबा इन एज ए फंक्शन ऑफ ए नॉट with some constant multiplied. So गोटे पर्टिकुलर ऑप्टिमम रेडियल डिस्टेंस रे मैक्सिमम पॉइंट रे सेठी कौन होची ना सबुतक डॉट जदि वो थिन आउट हो गला डॉट संख्या कमिलानी किंतु सबुतक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिसई देले सेठी मैक्सिमम होची कारण सेटा बहुत दूर नुहे बहुत दूर पूरा थिंड आउट हो बहुत पाखरे नुहे जो डॉट संख्या देखा जाउची बहुत डॉटिंग बहुत कंसंट्रेशन अधिक अछि डॉट्स मानकर किंतु ताकू मिसई देले कमी जाउची किंतु गोटे पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस रे डॉट मान को मिसई देले टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम सेति पई न्यूक्लियस रे जीरो एंड इट इज मैक्सिमम एट सर्टेन ऑप्टिमम रेडियल नॉट हायर not lower not higher on a particular distance रे से जो डॉट्स मान को मिसई देले तार टोटल एडिशन कर देले तार डेंसिटी ता मैक्सिमम होची इन द एंटायर दैट स्फेरिकल लेयर गॉट इट अरे बुझिल yes sir स्वयं आज्ञा सर डी describes the manner in which पढ़ी सारे हाँ एटा पढ़ी सारे एटा तुम घरे लिखिदब टिके जगह छाड़ दियो 17 स्लाइड टा तुम जगह छाड़ दियो लिखिबो नाउ आमे ग्राफ काटिबा सेटा आमे जीवा पूर्व काटिबा बर्तन डी वर्सेस आर ग्राफ व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ सेटा एस ऑर्बिटल पाई मध्य देयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन समस्त ओरिजिन टू स्टार्ट होची सो गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस रे मैक्सिमम पॉइंट आसुची द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन in the radial distance r so that maximum point is exactly a naught जहाँ को आमे हाइड्रोजन एटम रो आमे कहउथले रेडियस ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड एन टा 1 कले जेड टा 1 कले ए नॉट होतला सेटा वर्तमान ये अनुसार वेब मैकेनिक अनुसार ता कहबा मोस्ट प्रोबेबल रेडियल डिस्टेंस ताको बोस थ्योरी रे कहउथले रेडियस ऑफ के सेल एमती कहउथला बर्तन 1s ऑर्बिटल रो मोस्ट प्रोबेबल रेडियल डिस्टेंस होची ए नॉट ता पूर्वर भी अछि ता पर भी अछि 1s ऑर्बिटल पूरा रहिछि किंतु गोटे पर्टिकुलर मझिरे तार जो लेयर टा अछि से लेयर रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम देखो 2s रे गोटे नोड अछि तेणु सेटा जोटा बड़ थिला सेटा 4 पाई स्क्वायर ये कर देले प्लॉटिंग कले छोट हो गला एवं एटा बड़ हो गला जोड़ा छोट थिला बड़ हो गला एटा बड़ हो गला किंतु से एका रेडियल डिस्टेंस रे टच करूछि सेठी जोटा नोड थिला एटी भी सेठी नोड तो यही कुनी पहाड़ को कहती सब्सिडियरी मैक्सिमम मैक्सिमा जेतेटा कुनी पहाड़ अछि सबुठु लास्टा बड़ पहाड़ ताको द प्रिंसिपल मैक्सिमम एवं से पर्टिकुलर ऑर्बिटल रो मोस्ट प्रोबेबल रेडियल डिस्टेंस होची द मैक्सिमम पॉइंट करेस्पोंड टू द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम किंतु 2s ऑर्बिटल रो some electron density will be also found in the 1s एटा a नॉट हबो तेणु 2s रो किछि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1s ऑर्बिटल रे मध्य अछि कम 1s रो मैक्सिमम अछि a नॉट रे किंतु 2s रो टिके अछि सेति पई तारो पेनिट्रेशन टिके अधिका कंपेयर्ड टू 2p 2s रो पेनिट्रेशन अधिका बोली तार एनर्जी कम तार अट्रैक्शन अधिका एनर्जी कम एंड यार प्रिंसिपल मैक्सिमम अछि 5.23 a नॉट पोजीशन रे अछि ए नॉट रो वैल्यू आउ थरे दे दीची 2p रे नो नोड रेडियल नोड सो तार 4 ए नॉट रे पड़िबो तार प्रिंसिपल मैक्सिमम आउ 3s रो दीटा नोड तेणु दीटा तार कुनी कुनी पहाड़ गोटे कुनीएस्ट गोटे कुनी सो दीज आर द सब्सिडियरी मैक्सिमा एंड दिस इज द प्रिंसिपल मैक्सिमम जोटा चु कहंती द मोस्ट प्रोबेबल रेडियल डिस्टेंस फॉर द 3s ऑर्बिटल एगुडा को ता माने 3s ऑर्बिटल रो किछि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2s भी रहइबो 1s भी रहइबो तार जिते अधिका नोड हम से अधिका पेनिट्रेशन पावर अधिका हम 3s 3p 3d हिलाड़ू 3s रो एनर्जी बहुत कम ही जाउची एथि पेनिट्रेशन अधिका सेमती 3p रो गोटे नोड सब ओरिजिन रो आसीबो एंड 12 ए नोड रे तार प्रिंसिपल मैक्सिमम सेमती 3d रो नो नोड सो मैक्सिमम आसीबो 9 ए नोड रे एटा का ड्रा करि दबो आई थिंक वी क्लोज एटा एबे टिके ड्रा कर दियो पळेबा
D versus R ग्राफ ड्रॉ कर दियो तीनटा ग्राफ हला साई बा R versus R तब बहिरे थिबो साई versus R जो नेगेटिव तळकु जाइथिबो ऊपर को उठथिबो 1s रो नाही 2s रो तळकु अछि किंतु साई स्क्वायर वर्सेस बट R स्क्वायर versus R ग्राफ रे तळ ଆଉ नाही सब ऊपर को जाइलानी किंतु दूर at a later at a higher radial distance से ग्राफ गुड़ा बड़ किंतु D versus R रे सेटा छोट नहीं नहीं हायर को गले छोट R स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस R रे जे दूर को जीव से ग्राफ गुड़ा छोट हो जीव स्क्वायर हे जीव किंतु छोट हो जीव किंतु D versus R बेलू को उल्टा रेडियल डिस्टेंस कम रे कुनी कुनी पहाड़ एवं जेते दूर को दूर जीव मैक्सिमम टा होची सभा शेषटा से पहाड़टा सबुठु अधिका तार maximum point represents the most probable radial distance. विस्मय कौन सार दिलानी हैं सार दिलानी Yes, sir. Again, এই sir. জিনিস লিখেছি information about number of radial nodes can be known from D versus R or same R square versus R so information of radial nodes सबुथुर जଣା पड़ साई वर्सेस आर रू साई स्क्वायर वर्सेस आर रू डी वर्सेस आर सब जଣା पड़ जिवो फॉर ऑर्बिटल्स हैविंग मल्टीपल मैक्सिमम पॉइंट्स द प्रिंसिपल मैक्सिमम गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल रेडियल डिस्टेंस फॉर 2s orbital the most probable radial the some electron density is also present inside the 1s orbital and that represents the subsidiary maximum for 3s orbital some electron density present in 1s as well as 2s मु कहि जानि लिखि दबा घरे एटा सब होईची एवं d versus r ग्राफ टा मु कंपेयर करछि 1s रो 2s रो 3s रो 1s रो नो नोड 2s रो नोड 1s रो घरे तेरे अंगने में हमारा क्या काम है 2s 1s अंगने में 2s का क्या काम है ये वेब मैकेनिक्स ये सब हस हो सकता है 2s रो गोटे गोड़ रही कुनी गोड़टे रही 1s रो 3s रो गोटे गोड़ 1s रही आ गोटे गोड़ 2s रही 3s रो मैक्सिमम रही सेपरेटली जोड़ा तुम इंटरसेक्शन एरिया से थ्योरी इंटरसेक्शन एरिया ना कौन कह एरिया रे रही सेपटा अनकमन एरिया रे बेसी रही किंतु किछि किछि रही जाउछि सेपटे भितरे सो एटा ड्रा करिवो एटा हम देखैछि 4s 4p 4d 4f काहे कि 4s रो पेनिट्रेशन अधिका पेनिट्रेशन तो पूरा पूरा तार तीनटा रेडियल नोड पूरा भीतर को पसे ए यू नो 4p रो दीटा रेडियल नोड 4d रो गोटे 4f रो किछि नाही तेनो सेति पई पेनिट्रेशन तार अलगा रेडियल नोड्स रो फॉर्मूला इट इज एटा n - l - 1 एवं गोटे देखै देछि गोटे 3D पिक्चर करके 1s रो ता भीतर किछि रोड नाही 2s रो देखो हळदिया गोटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोटे ब्लू ता मझिरे जो धଳାटा होछि गोटे रेडियल नोड गोटे स्फेरिकल सरफेस सेमती 3s रो दीटा धळा देखितबो एठी गोटे धळा ताठी गोटे धळा दीटा रेडियल नोड्स एटा p रो 4p रो जो धळा पोर्शन गुडा को नोड एंगुलर नोड देखिनी खाली रेडियल नोड तुम पाइब एठी गोटे एठी आ गोटे एठी 4p रो दीटा आउ 3p रो गोटे एठी कला आ पुणे आउ थरे कला भितर जो धळा पोर्शनटा अछि सेटा होछि नोड गोटे कराइछि आउ 2p रो किछि नाही से भलिया बस कराइछि से एंगुलर नोड्स कथा एई पर्यंत तुम नोट्स लिखिबो जेतिकी पारिबो चित्र करिवो चित्र सब करिवोनी एटा लेखा पोर्शन गुडा को लिखिबो एगुड़ाक जे करिया दरकार नहीं तो पाखे अच्छी आईटा लिखो एटा लिखो तो मुझे कर सारे सो आम सोमवार दिन बाकी तक एंगुलर नोड आउ ये अल्प टे एंगुलर नोड मुझे टायर्ड हो गली एंगुलर नोड आउ येटा बाकी तक बाकी सब छोट छोट सब विषय बाकी सब विषय सब छोट छोट एंड नाउ इट इज टाइम मिस्टर ये स्वयं जो बहीटा नहीं सीटार 200 ना 300 कण थी आरंभ कर दियो केवल जोटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी कहीपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जोटा गोल बुले दब पेनसिल रे गोल बुले दब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मुझे पढ़े नहीं कनसेप्ट तुम क्लीयर हो गला सब कर तो बाकी सब जिनस तुम कर एंगुलर नोड जब आसो कहीपर किंतु सिलेक्टिवली बहुत कर हाँ ना नहीं आज्ञा सर आरंभ कर दियो सब सब टॉपिक रे परीक्षा करी तुम पाखे जोड़ा विस्मय तुम पाखे जोड़ा मिली तुम ये स्कूल रू तो से जो बहुत गुड़ाक थी से आरंभ कर दियो एंड जोटा डाउट अच्छे पचारे एवं नुहे सरी जाऊ
तापर तमे जेते मते डाउट पचारि परिबो एटॉमिक स्ट्रक्चर रे जोठी पाइबो तमे कहि परिबोनी मते पचारि बाय बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर।